modal verben. Sentence formation, or you say word order. Simple, we call it simple sentence. सबसे पहले हमारे पास आएगा subject. मॉडल वर्ब हमेशा हमारे पास लास्ट सेकंड पोजीशन पर रहेगी, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं होता इसका. डिफरेंट सेंटेंस कैटेगरीज होती हैं, जब हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं. सिंपल सेंटेंस में हमेशा मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पर रहेगी, एंड दैट टू द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब. Third form is going to be the object. Now this object can be my direct or indirect. When I say direct, it is accusative. When I say indirect, it is dative. Last में हमेशा infinitive form of the verb. हमेशा infinitive form of the verb हमेशा last में रहेगी. Beispiel. Ich will die Kartoffeln schneiden. Ich will in die Disco gehen. If you see, I have subject, modal verb, that's my object, that's the infinitive. लास्ट में कभी भी conjugated form of the verb नहीं आएगी, हमेशा infinitive form of the verb. अब let's see हम direct indirect कैसे यूज करेंगे, वही NAD और NDA का रूल. Let's try. Ich möchte dir das Buch geben. I would like to give you the book. Nominative, dative, accusative. अब यही सेंटेंस हम NAD में देखते हैं. Ich möchte das Buch von dir instead of geben. You can use him. I mean, sentence doesn't make any good sense, but grammatically this is correct. The idea is to use accusative, dative, nominative. NDA and AD. Modal verb second position, infinitive verb in the end. Modal verb, infinitive verb. Negative sentence. Subject, modal verb, object, can be direct, can be indirect. Plus we have nicht and infinitive. Now again, if we remember, जब हमने nominative किया था तो sentence formation में हमने एक kind की form रखी थी. Same thing we will follow here. अगर हम kind वाली form use करेंगे, it is going to be here. अब या तो हम ये use करेंगे, either or. या तो हम यूज करेंगे काइन या हम यूज करेंगे निश्ट. और काइन कब यूज करेंगे, निश्ट कब यूज करेंगे, दैट मेक्स अ चैलेंजिंग टास्क. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो हम यूज करते हैं काइन फॉर्म. मम्मी मुझे सेब नहीं खाना, मैंने किसको नेग्लेक्ट करा है, मैंने नेग्लेक्ट करा है सेब को, तो यहां हम यूज करेंगे
काइंड। मुझे कॉफी में चीनी नहीं डालनी, मैंने नेग्लेक्ट किसको करा है? चीनी को। अब अगर हम किसी वर्ब को नेग्लेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉफी नहीं पीनी है, मैंने नेग्लेक्ट करा है पीने को, तो हम यूज करेंगे निश्चित फॉर्म, हम कोई और फॉर्म यूज नहीं करेंगे। Ich will keinen Kaffee trinken. Ich will Kaffee ohne Zucker nicht trinken. See? I am neglecting the coffee, and here I am neglecting the coffee without sugar, nicht trinken. Or ich will Kaffee ohne Zucker, keinen Kaffee ohne Zucker trinken. You can frame either or. But nicht जो है वो हमेशा infinitive से पहले रहेगा, and there are no exceptions. nicht की कोई और पोजीशन नहीं होगी सिवाय infinitive से पहले। Interrogative one. Frage. We have two categories. सबसे पहले we have W Frage plus modal verb, then comes the subject, then comes the object. Again, object can be direct or indirect. Then comes the infinitive form. Then there is a question mark. अगर आप देखो ना, यहाँ पर सारे हमारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। नाउ एग्जांपल देखते हैं। I don't want to drink coffee. My question is, why you don't want to drink coffee? Warum willst Subject du keinen Kaffee? Object keinen Kaffee. Infinitive trinken. Warum willst du keinen Kaffee trinken? Why you don't want to drink any coffee? What would you like to drink? क्या पीना चाहते हो? कॉफी नहीं पीनी तो कुछ तो पीना होगा। क्या पीना चाहते हो? So was willst du trinken? B-Frage, modal verb second position, third position. Object we don't have because we are asking what exactly do you want to drink. Object है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। Trinken. We don't have. Next we have Ja-Nein-Frage, which is my yes-no question. Ja-Nein-Frage. When we use Ja-Nein-Frage और जब भी हम इस कैटेगरी में क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है it always starts with verb, and in this case our verb is modal verb plus what next? We have the subject. What next? We have the object. Now object can be accusative, can be dative. Sentence will over with infinitive form of the verb. सेंटेंस हमेशा खत्म होगा इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब से। एग्जाम्पल, willst du, was willst du trinken is, what do you want to drink? Willst du einen Kaffee trinken? Willst du, object, einen Kaffee trinken? Do you want to drink a
coffee. Do you want to drink coffee? Willst du einen Kaffee trinken? So this is how we frame sentences using modal verbs. कंजुगेशन क्या आती मॉडल वर्ब्स की? बॉलन की अगर बात करें, ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Dürfen की कंजुगेशन, ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. Können की, ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können, sie können. ये हमारी कंजुगेशन है. अब जब भी हम मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, यू सी ईदर मॉडल वर्ब इज कमिंग एट सेकंड पोजीशन और द फर्स्ट पोजीशन. मॉडल वर्ब कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगी. इसका बाय डिफॉल्ट जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा हमारा क्वेश्चन, नो एक्सेप्शन. क्योंकि सेंटेंस कभी भी वर्ब से स्टार्ट होगा तो या तो वो होगा हमारा इंपेरेटिव या होगा क्वेश्चन. इंपेरेटिव की हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की. लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? माय सेंटेंस इज व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? तुझे मुझसे क्या चाहिए? आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अब यहां पर फ्रॉम मी is my dative. You, nominative. Modal verb. Okay. And what do you want from me? That's haben is what. So we write was. W frage. Modal verb want with you. Willst du. Was willst du from me? Von mir. Was willst du von mir? Was willst du von mir? When do you want to go? When do you want to go? तुझे वहां कब जाना है, या तू वहां कब जाना चाहता है? X, Y, Z, whatever form. When do you want to go? My question, one, modal verb willst du. Do we have any object? No, it is simply the verb. One willst du gehen. One willst du gehen. Another example. What do you want to eat? What do you want to eat? In this sentence also, we do not have any object. It's just a question. Was willst du essen? What do you want to eat? Another question. Do you want to drink juice? In this one, I have an object. And what is my object? My object is the juice. Verb wollen. Willst du. Modal verb subject. Object is juice. Saft. To drink. Willst du Saft trinken? Willst du Saft trinken? These are the questions. Let's try to use different modal verbs now. Instead of wollen, let's focus on different one. I have to
study. What is the modal verb here? I have to study. This modal verb is müssen. जो has to have to वाली फॉर्म होती है वो हमारी müssen की होती है. Subject ich muss studieren. I have to call my father. Another example. I have to call my dad. In this one, who has to call? That's my nominative. That's my modal verb. That's my infinitive. That's my object. Ich muss. Who do I have to call? My father. Father is masculine. This is my accusative part. Accusative masculine becomes meinen Vater. Ich muss meinen Vater anrufen. Ich muss meinen Vater anrufen. She has to learn for the exam. There are two things. I have subject, which is nominative. Has to is the modal verb. Learn is the infinitive. For is the accusative preposition. This is my object. So, subject first place. Has to. Muss. Sie muss. Object for the exam. Für is the preposition for für die Prüfung. Für die Prüfung. And learn is lernen. Sie muss für die Prüfung lernen. Why you have to cook coffee without sugar? Why you have to cook coffee without sugar? अब प्रैक्टिस करने का ना ये सबसे अच्छा तरीका है कि रियल लाइफ सेंटेंसेस उठा लो. जो भी आपके दिमाग में सेंटेंसेस है उन्हें उठाओ और ट्रांसलेट कर दो. दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे. कोई बुक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है. आप बस आपके आसपास जो भी सेंटेंस दिखे उठाओ, ट्रांसलेट करो. उठाओ, ट्रांसलेट करो. पापा रात को लेट आए ऑफिस से. पापा को बोलो आप रोज लेट क्यों आते हो? Why do you have to come late every day? Warum musst du spät jeden Tag spät kommen? उठा लो, बना दो. Warum you have to must do what you have to cook, what he or she has to cook. Kaffee. Warum musst du Kaffee ohne Zucker kochen? और कॉफी के साथ हम जनरली माखन लगाते हैं. माखन. I have to learn. This we have done. Learn we have done. I cannot learn without you. Modal verb können. I cannot learn without you. Subject ich kann lernen. I can learn. Ich kann nicht lernen. I cannot learn without you. Ohne dich. Ich kann ohne dich nicht lernen. They should learn for the exam. Again, another modal verb.
should. Sie sollen. Sie sollen lernen. They should learn. Now अगर मैं en हटा के यहां पर en हटा के गलती से एग्जाम में t लगा दूं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा? she but sollen, sie sollen lernen, they should learn. Für die Prüfung lernen. Sie sollen für die Prüfung lernen. They should learn for the exam. You may write any sentence in the chat box जिसका आपको मीनिंग पता करना और whatever you want me to help you in the translation for. किसी भी सेंटेंस का अगर आपको कोई मीनिंग पता करना है तो आप प्लीज यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. Another example. Why do you have to go without me? Why do you have to go without me? अभी accusative preposition यूज कर रहे हैं, dative पे भी आएंगे. Model verbs. So warum? Model verb have to. Musst du gehen. Warum musst du gehen? Why do you have to go without me? Without its owner. Why do you have to go without me? Warum musst du ohne mich gehen? अब dative आते हैं. Without की जगह why do you have to go with her? Question लिखते हैं ये वाला. The same sentence. Why do you have to go with her? Why? Same sentence. Do you have to go with her? Warum musst du mit ihr? Mit dative and ihr. Warum musst du mit ihr gehen? Same sentence. This is how we use modal verbs. Does he or he should not call me? He shouldn't call me. Statement. Okay. Er soll mich nicht anrufen. Er soll mich nicht anrufen. He should not call me. Let's try to solve few of the exercises. So these are the few of the exercises जो हम solve करने की कोशिश करते हैं. Warum müssen du den schon gehen? अब ये मुझे इनकी conjugation, the conjugated form of modal verb जो हमें fill करनी है. What is the subject we have? Do. Musst. Ich muss, du musst.
Ich sollen. Ich soll. Dürfen. What is the subject? अगर आपने रूल्स फॉलो किए हो तो सब्जेक्ट क्या है? दिस इज माई क्वेश्चन. W फ्रागे. How to identify a subject in the question? This is my W frage. Question. After W frage, there has to be the modal verb. After modal verb, there has to be the subject. What is the subject? Deine Schwester. Third person singular. Darf. Third person singular. Darf. Meine Eltern. Subject. Mögen. Plural. Meine Eltern mögen. Plural. Warum du möchtest? Ich mag. Es soll. This is the trick for the A1 learners. अगर आपको मॉडल वर्ब कंजुगेशन फिल करनी नहीं आती है या चैलेंज होता है तो दिस इज हाउ यू मे डू इट. सब्जेक्ट एस. वियर सेम. können. Ihr möchtet. Wir dürfen. Question mark. Sentence start with a verb. Maria singular. Kann. Sie will. That's how you can do it. Let's try another exercise. Let's try to solve these exercises. Take around 2 minutes of time and try to solve it. Then we discuss together. Alright. So in this one, Tanya, subject, will, do, müsst, Kurt, singular, kann, du, mögen, magst. Warum? W Frage, subject, Z capital, that's you. Dürfen. Dürfen. S soll. Warum? Z again, S capital. Wollen. Ihr könnt. Hans singular. Möchte. Was ich soll. So these are the tricks जो आप यूज कर सकते हो मॉडल वर्ब्स को यूज सेंटेंस मॉडल वर्ब से सेंटेंस फ्रेम करने के लिए. बहुत इजी है. अब आप देखो हर सेंटेंस के एंड में वी हैव इंफिनिटिव वर्ब. इसमें नहीं है. वी हैव इंफिनिटिव 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 इंफिनिटिव. दिस इज हाउ वी यूज मॉडल वर्ब्स. You may please write down your questions in the chat box in case you want me to clarify your doubts. कुछ भी आपको क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. और अगर आपको ये PDF whatever I am just creating on the board, in case someone wishes to have the PDF, may please write down your email ID in the chat box. आप सबको मेल कर दिया जाएगा. You all will be given handed over this PDF in case you wish to have. So that was all about the model verb. We have done enough practice conjugation. We have tried to conjugate the verbs. We have tried to form the sentences. We have learned the pronunciation and XYZ. This was all about the modal verbs. And as said,
Mögen is the only modal verb जिसके end में we will never use infinitive. So simple sentence. Subject plus Mögen plus object. Negative. Subject plus Mögen plus object plus nicht, or we can use keinen, that kind, either kein form or nicht, but not two things together. Interrogative. W-Frage plus Mögen plus subject object. Mögen as the verb plus subject plus object plus question mark. Ich mag Orangensaft. Ich mag Autos. Ich mag keine Autos. Ich mag die Autos nicht. Warum magst du Autos? Warum magst du Saft? Magst du Saft? Magst du Autos? So this is the word order for the modal verb mögen. In case of any question, you may please write down in the chat box. We will try to resolve all your questions, queries. Thank you very much. Bis gleich.